Good evening, students. Sonam and Shivani. Okay, only two students. What about others? What about others? Can we just wait for 2 more minutes? Sonam and Prisha. Yes, just 2 more minutes. All right, fine. I think that's it. We'll begin. All right. Good evening once again. I hope you guys are fine. All good. Safiyur, how are you? How's you, Prisha? Sonam? Fine? Okay, fantastic. How about Prisha? How about Safiyur? All good? Okay. Am I audible? Am I clearly audible? Yes, ठीक है. Last time we have started with the chapter natural resources, correct? Yes, we have started with natural resources, and in that we have reached till air pollution. We have already completed rain. Rain, after rain, we have almost like started with air pollution. We were discussing about it and then we stopped it. Am I correct? Correct me if I'm wrong, right? Yes, no, no, yes. Say some, type something. Yes. Okay. Fantastic. So we'll continue the same thing. Now, there we go. Hmm. Can you see my textbook shared? Is my textbook visible? Okay, Safi. Okay. All right. Fine. We kept hearing of increasing levels of oxides of nitrogen and sulfur in the news. People often become bemoan the fact that the quality of air has gone down since their childhood. Okay,
Demon as when they don't speak much about it. Hmm? How is the quality of air affected, and how does the change in the quality affects us and other life forms as well? The fossil fuel like coal and petroleum contains small amounts of nitrogen and sulfur. Sorry for this, please excuse me. I'm little not well. When these fuels are burnt, nitrogen and sulfur too are burnt with this produces with this products and produces different oxides of nitrogen and sulfur. We all know that it produces Aryan Srivastava. Okay. It produces different oxides of sulfur and nitrogen. We know that. Okay. Whenever there is a burning of fossil fuels, let's say petroleum or diesel or oil, all these will give out different oxides. Oxides is what? Incomplete burning of fossil fuels. It results to the oxides, that is incomplete formation of nitrogen and sulfur. Okay. नाउ ऑक्साइड्स का क्या होता है? ओनली ओ होता है, और जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो O2 होता है. ठीक है. ऑक्सीजन इज गुड, इट कैन बी reduced down, it is friendly to the environment. Oxides are not. Is that clear, everybody? Oxides are not, because they are incomplete burnt fuels or incomplete formation of the given compounds. Am I clear with this? All good? Sonam, Safiur, yes? Okay. Prisha, Aryan, everybody's with me? Mm-hmm. Okay. Yes. So now what will happen जब ये incomplete वाले burn हुए चीजें environment में present होगी? Of course, not only the inhalation of these gases are dangerous, they also dissolve the rain to give acid rain. Now, when they are incompletely available in the nature, okay, उनका complete combustion नहीं हुआ या उनका complete dissolution नहीं हुआ है, they are going to mix with air quality. Okay, they are going to mix first with air. Second, they are also going to mix with water. Water in the form of rain, air in the form of gases. ठीक है, इसके साथ mix होके they are going to cause harmful effects in our environment. The combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air. जैसे कोल, जैसे कोल सूट, ये जो निकलता है फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, that is also going to contribute to the air. These suspended particles could be unburnt carbon particles or substances called as hydrocarbons. जब ये कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होता है तो हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के साथ ये मिक्स होके हाइड्रोकार्बन बनाता है. ठीक है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाता है, बट हाइड्रोजन और कार्बन जब मिक्स होते हैं तो हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होती है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ जुड़ जाती है, फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन्स. एम आई क्लियर विद दिस सो फार? इतना क्लियर है सभी को? Presence of high levels of all these pollutants cause visibility to be lowered. First thing, foggy बना देती है environment को, especially in cold weather when water also condenses out of the air. This is known as smog. क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन्स? ये एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको थिक बना देते हैं. थिक बनता है तो एयर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ट्रांसपेरेंट इट स्टार्ट्स बिकमिंग ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट बनता है, उससे क्या होता है? स्मोक और फॉग का एडिशन. स्मोक, एनवायरनमेंट में स्मोक जो हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होता है और जो फॉग मॉर्निंग में होता है, ये दोनों मिला के बनते हैं स्मॉग. ठीक है, एवरीबडी नोज ना वर्ड स्मॉग. और ये क्या करता है? विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है. इवन ब्रीदिंग रेट इसमें अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and lots of carbon compounds in it. Studies have shown that regularly breathing air that contains any of these substances increases the incidence of allergies, cancer, and heart diseases.
An increase in the content of these harmful substances in air is called as air pollution. Very important. An increase in the content of which substances? The substances that causes allergy, cancer, and heart diseases. Okay, they are called as air pollution. इतना clear है? From our class, anybody staying in Delhi? Anybody staying in Delhi here? I saw in the attendance. Who is it? Who stays in Delhi? Yeah, Bhubaneswar and who stays in Delhi? I think Prisha, right? Anybody staying in Delhi otherwise? So, सबसे पहला जब क्लाइमेट वेदर चेंज होता है तो दिल्ली इफेक्ट होता है, दिल्ली के पोल्यूशन रेट इफेक्ट होते हैं। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि दिल्ली के कुछ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दिल्ली में दिवाली के बाद स्पेशली बहुत सारा फॉग होने की वजह से वहां पे हेल्थ लोगों की खराब होने लगी है। यस, हैव यू कम अक्रॉस सच न्यूज? सफीर, प्रिशा, आर्यन, सोनम, yes or no? Yes, because दिल्ली का वेदर इज ड्राई और उसमें जब ये स्मॉग मिक्स होता है तो ड्राई वेदर के साथ बहुत सारा इसको हेवी सा ये करता है, कंडेंस करता है, मतलब उसको और ज्यादा थिकनेस देता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी रेट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्राई एयर। ऑल राइट, ठीक है। कमिंग बैक हियर नाउ, अब क्या होता है, देर आर सर्टन फैक्टर्स विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट to the pollution and there are certain factors which can save you from the pollution. यहाँ पे organisms called as lichens are found to be very sensitive to the levels of contaminants like sulfur dioxide in the air, as discussed earlier in the section 7.3.3. Lichens can be commonly found growing in the barks of the trees as thin greenish white crust. See if you can find the lichens growing on the trees in your locality. Compare the lichens on the trees near busy road and trees some distance away. On the trees near road, compare this with incidence of the lichen on the side facing of the road and on the sideways of the road. What can you say about the levels of polluting substances near roads and away from the roads on the basis of your finding? ठीक है, लाइकेंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर आपने ट्रीज देखे होंगे जिसके ऊपर ग्रीनिश व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ऐसे फैला हुआ होता है, बार्क्स के ऊपर स्पेशली ब्रांचेस के ऊपर। हैव यू सीन एनीबॉडी? आप लोगों ने देखा है? यस, नो, नो, यस, देखा है, नहीं देखा है? ओके, 1 minute, I'll try to show you. On my recent visit, I have captured certain trees और उसके ऊपर का lichens. It is naturally available. ठीक है, 1 minute. One minute. Huh? Can you see my screen not shared? Na? 1 minute. One minute. Hopefully ये वाला नहीं है। 1 minute, children. Okay, there you go. Perfect time, perfect example. Uh, can you see this image? Everybody? Can you see this image? This one. Yes?
या दिस इज लाइकेन, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज लाइकेन। अगर आप इसको जूम करोगे मोर, कैन यू सी द स्ट्रक्चर, ये लाइकेन्स है। ये लाइकेंस क्या करते हैं, एक तो पहली बात, दीज आर वेरी गुड इंडिकेटर्स। आपके नेचर में अगर लाइकेन प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एयर क्वालिटी अच्छा है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑल द पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये आपके पोल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए रोड साइड पे पता है झाड़ लगाए होते हैं, ट्रीज लगाए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उस ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर ये लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ लाइकेंस आर सीन? यस, Aryan, Sonam, Prisha, Safir is there? Yes. तो ये लाइकेंस क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। जिस एरिया में लाइकेंस प्रेजेंट है वहां पे स्मॉग ज्यादा नहीं होता है, पोल्यूटेंट लेवल हाई नहीं होते हैं। ओके, जिस एरिया में लाइकेन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वहां पे एब्जॉर्बेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे पोल्यूटेंट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर सो फार? विल गो बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, देयर वी आर। तो यहाँ पे द सेम लाइकेंस आर फाउंड टू बी वेरी सेंसिटिव टू द लेवल ऑफ कंटामिनेंट्स, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इतना क्लियर है? हम्म, ओके। आई हैव बीन टू माय रीसेंट ट्रिप टू मेघालय। तो मेघालय में आई हैव क्लिक केव्स का फोटो, उसमें भी एल्गी दिखाई दिया था, कुछ ट्रीज थे वहां पे बहुत सारा लाइकेंस था। एंड बिलीव मी, जहां जहाँ पे लाइकेंस था वहां वहां पे एयर वॉज फ्रेश। इफ यू ब्रीद इन एयर इट वॉज सो फ्रेश, आपको ऐसा फ्रेशनेस फील होता था। ओके, सो आई हैव क्लिक दिस पिक्चर देयर ऑन माय रिसेंट ट्रिप। आई हैव क्लिक मेनी पिक्चर्स। एक तो ऐसा पिक्चर क्लिक किया है कि बड़ा सा रॉक है और रॉक के बीच में से ना एक बड़े से ट्री के ना रूट्स पास हो रहे हैं और पूरा का पूरा रॉक को क्रैक कर रहे हैं, विदरिंग ऑफ रॉक। That also I've clicked. I'll show you. What happened, Safir? Why? Why, bacha? You are good? All okay? You're okay? Acha, you're at Guwahati. Okay, Safir. See if it is possible to join. Otherwise, you may leave, bacha. Okay, okay. You're going to present your project. All the best, Safir. All the very best. You can leave, no worries. Yeah, dear. Bye. ठीक है? So today Safir नहीं है. We'll just wind up class today in half an hour. चलेगा? Even I'm not well. Yes, the area is far from the city. Absolutely. ठीक है, that area is far from the city. ठीक है, इतना भी फार नहीं है। इफ यू गो इन मेघालय, वहां पे सिटीज में भी है ना, वहां पे बहुत कम पोल्यूटेंट्स है, बिकॉज दैट एरिया इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। इट इज कवर्ड बाय ट्राइबल पीपल। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ट्राइबल पीपल, कैथलिक पीपल, और वहां पे अब बहुत कम मुस्लिम्स है लेकिन हिंदू पीपल है, तो इसका कॉम्बिनेशन करके वो एक ट्राइब है। सो देर आर 3 एरियाज, एक तो खासी हिल्स, जैनशिया हिल्स, एंड वन मोर हिल इज देयर। ठीक है, तो ये तीन हो गए। आई हैव बीन टू खासी हिल्स, सो वहां पे पूरा खासी ट्राइब है, एंड दे आर मोर रिलेटेड टू द नेचर। दे फॉलो एवरीथिंग ऑफ द नेचर। इवन उनके ब्रिजेस भी बैम्बू से बने हुए रहते हैं। दे डोंट मेक आयरन के ब्रिजेस। उनके पाथवे भी होते हैं, दे डोंट मेक इट आउट ऑफ कोल तार, डामर, सीमेंट, ये सब नहीं होता है वहां पे। दे मेक दिस पाथ आउट ऑफ देयर, क्या कहते हैं, रॉक्स होते हैं, रॉक के बीच बीच में से बना देते हैं, या वहां पे छोटे छोटे रॉक्स डाल के खुद नहीं बनाया हुआ रहता है पाथ। हाँ, अगर गवर्नमेंट का रहेगा तो कोलतार रहेगा मेन रोड। अदरवाइज अगर रिमोट एरिया में जाओगे वहां पे, तो दे हैव मेड देयर ओन वेज, कच्चा रोड रहता है वहां पे। Okay, I'll tell you other stories afterwards as we go ahead. Huh? So this was all about air pollutant. Can we go ahead with water? Water, of course, is a wonder liquid. Okay, nothing can survive without water.
Everything needs water, right? From living, non-living thing, everything has a composition of water. Hmm? Water occupies a very large area on the Earth's surface and is also found underground. Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere, of course. वाटर के अलग अलग phases होते हैं. कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ वाटर लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो हम पीते हैं, जो हम फील करते हैं. कुछ वाटर आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे ग्लेशियर्स आर्टिक ओशन में. ओके, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, आइसबर्ग्स, ये सारी चीजें. So everything is covered on the earth. Majority is found in the form of water. So far clear? Yes. Most of the water on earth's surface is found in seas and oceans and is saline. जितना majority पानी है, let's say 70% of water is saline. खारा पानी है. Fresh water is found in frozen in ice caps and two poles on south covered mountains. नॉर्थ और साउथ पोल में फ्रेश वाटर मिलेगा विच इज कवर्ड विद द आइस कैप्स. ग्लेशियर्स, दे आर फॉर्म ऑफ द फ्रेश वाटर्स. ठीक है. द अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर इन द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स इज आल्सो फ्रेश वाटर. जो अंडरग्राउंड में स्टोर होता है पानी, ओके, जो हमको वेल में मिलता है, जो हमको ट्यूब वेल में मिलता है, बोरिंग जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर. ठीक है. However, the availability of fresh water varies from place to place. जगह जगह पे depend होता है fresh water. Practically, every summer, most places have to face shortage of water. And in rural areas where water supply streams systems have not been installed, people are forced to spend considerable amount of time in fetching water from faraway sources. We are lucky enough to get fresh water easily accessible. ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कभी म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं तो कभी वेल का पानी नहीं तो ये, वो ऑप्शंस है हमारे पास. बट देयर आर सम रिमोटेस्ट एरियाज इन द कंट्री जहाँ पे लोगों को हंड्रेड्स, नॉट हंड्रेड्स, आई से टेंस एंड फिफ्टीज ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है. ऑल्टरनेट डे लोग जाके पानी लेके आते हैं. ओके, देयर आर मेनी प्लेसेस इन द कंट्री where fresh water is not available for drinking and cleaning purpose. Yes? Okay. All right. But why water is so necessary? And do all organisms require water? All cellular processes takes place in the water medium. Very important. Our body has almost everything made out of water. ठीक है? Let's say हमारी बॉडी में सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारे के सारे प्रोसेसेस डस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, एवरीथिंग ऑन द अर्थ dissolves in water, almost everything, not एकदम भी everything, 100% नहीं, but out of 100%, 95% of things dissolve in water. Do you agree with me? Almost everything on the earth dissolves in water. All the reactions that take place within our body and within our cells occur between substances that are dissolved in water. Substances are also transported from one part of body to other in a dissolved form. Hence, organisms need to maintain the level of water within their body in order to stay alive. Very important. अगर लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करना है, आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, ड्रिंक वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स. नॉट एक साथ बैठ गए और एक साथ 1 लीटर पानी पिया, नो. आफ्टर एवरी 15 minutes you should have 200 ml of water, a glass of pani, to maintain the level of water in your body. Keep your body hydrated. Okay. Now, hence the organism need to maintain level of water within their bodies in order to stay alive. Terrestrial life forms require fresh water for this because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amounts of dissolved salts in saline water. Thus, water sources need to be very easily accessible for animals and plants to survive on the land. ठीक है? Our body doesn't have a capacity to dissolve saline water. Saline water is heavy water. Okay? Yes or no? It is so heavy
डेड सी का नाम सुना है एवरीवन? डेड सी का नाम सुना है? डेड सी की सैलिनिटी कितनी है? एनीबडी? एनी आइडिया? सोनम, आर्यन, प्रिशा, डेड सी की सैलिनिटी कितनी है? कम ऑन, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। नो आइडिया? नो आइडिया, yes, no, no, yes, say something, type something, no? Okay. डेड सी की सैलिनिटी है, that is 34% overall. Okay, it has a highest salinity in entire world. Yes, more than usual, of course. ठीक है, ये जो डेड सी है, it has a 34% of salinity. In fact, yes, and we can float on it. Our body can easily float on it. So imagine कितना heavy पानी रहेगा वहां पे. Yes, इतना heavy पानी है कि our body can literally float on it, and people go there. People around staying around over there go for a sea bath. Okay, because that sea bath is good for their body. It removes dead cells from their body. Okay, so ये वाले जो है, it has a very very high salinity. hmm? Now remember, okay, um where we are, हाँ, we have two activities. एक क्या है? Take a small area, 1 meter square near a water body. It may be river, stream, lake, or a pond. Count number of different animals and plants in this area. Also check the number of individuals of each type of species. Compare this with number of individuals, both animals and plants, found in area of the same size in a rocky region. Okay, एक तो लेक पॉन्ड के यहाँ पे कितने आपको प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल मिलते हैं, एंड रॉकी रीजन में कितने मिलते हैं. In this variety of plants and animal life, same in both areas. What do you think? Rocky areas or water areas में same रहेगा variety of plants and animals? In fact, number same रहेगा. Hmm? Yes? No. Where you can find, in which area you can find high number of plants and animal available? Which area? Rocky area or the water body wala area? Near water? Absolutely. Because every organism, plain area. Okay. Where every organism need water available, तो हम क्या करते हैं, नियर बाय रिसोर्सेस के यहाँ पे वी ट्राई टू सेटल इन. ठीक है, रॉकी एरियाज में इतने आपको सर्वाइवल वाले एनिमल्स नहीं मिलेंगे. एनिमल्स जो रॉकी एरिया में रहेंगे, वो कौन से एनिमल्स रहेंगे जो 1-2 दिन बिना पानी के रह सकते हैं? इवन लाइक कैमल्स, दे स्टे इन डेजर्ट, राइट? दे स्टोर वाटर. उनके पेट में बड़ा सा ये होता है, where they store water for longer period of time. They also store food. Okay, so such animals will stay in rocky areas or desert areas. Okay, is this clear? ठीक है. Shall we stop here for today? 14.9 will continue later along with water pollution. चलेगा? Yes? Okay. All right. If you have 2 minutes, I'll show you 1 or 2 pictures जिसमें you can see the caves and वहाँ का ये वाला. Sonam, Aryan, good? Or we can see next time? Chalo, we'll see next time. Abhi rehne do. All good? All good. Okay, perfect. 1 minute. I'll show you just 2 pictures. I wanted to share here fossil wala pictures. First thing. Wait a minute. So here you go.
sharing. I cannot share entire screen. I'll share one by one. Okay, can you see here? This, these are fossils. Okay, ये सारे impression दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? These are fossil. ये fossil living fossil है. जब भी वहां पे volcanic eruption वगैरह हुआ था, so this fossils, these animals got completely smashed in between the rocks and mitti over there. And these are fossils. You can see ये गोल गोल. You can see this. This is leaf. यहाँ पे कुछ fishes है. Can you see this? दिख रहा है यहाँ पे कुछ fishes है. Okay? यहाँ पे कुछ leaf है. These are all fossils. इसमें थोड़ा clear नहीं दिख रहा है. I'll show you another picture. Okay? These are fossils. ये सारे के सारे fossils वहां पे बहुत clearly visible है because of the presence of water. Okay, if you see there, the area is totally covered into water. There are caves. Caves के अंदर बहुत सारे limestones आपको देखने मिलेंगे. The structures, huge structures. I'll show it to you next time for sure. अभी open नहीं हो रहे कुछ images. I'll show it to you next time. Okay? चलो, let's wind up here for today. Bye everybody. Good night. Bye Aryan. Bye Sonam.